Dun, 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 dun. We are back with another live stream. We are back with another live stream. Soboscuribo. I'm single and I'm young. I'm single and I'm younger. I'm single and I'm younger. I am single and I'm younger. Genshin Impacts save. Genshin Impacts sang. I'm single and I'm young sang. Genshin Impacts. संग नारंग टेंट टेंट जादू पार्टी ज्वाइन कर. ओके 2 मिनट 2 मिनट 2 मिनट 2 मिनट दो मेरे को 2 मिनट दो मेरे को 2 मिनट दो मेरे को 2 मिनट दो मेरे को
एखादं पेज लिहून झालं की लगेच पिक काढून टाकत जावा इकडे इमिडिएटली. I hear the voice of fate, speaking my name in humble supplication. I created another universe and founded paradise. For I, Fischl, am the prince. I do worry about the well-being of my retinue during my impromptu absence. I'm sure the good people of the Adventurers Guild are absolutely fine, mein Fräulein. I do worry about the well-being of my retinue during my impromptu absence. I'm sure the good people of the Adventurers Guild are absolutely fine, mein Fräulein. जरा जरा लॅग होते ते.
worry about the well-being of my retinue during More my akut nahi hua impromptu tha. absence. Ha! Yep. I created another universe and founded paradise. For I, Fischl, am the Prinzessin de Ad Astra. सातच अजून करायला मी
5 स्टार बॉस फाइट स्टॉर्म टेरर नाही वुल्फ आणि बाकीचे डंजिन फिंजिन काय काय करून कधी मिळाले मला ते बी माहीत नाही ते नाही वुल्फ मी 4-5 वेळा मारलं मागं माहीत आहे पॉर्नमुळे पोरायची मारायची बिरायची करायची मारून मारून पारून पाक संपलं ते वुल्फ तिकडं हॅलो इंदिरा व्हॉट्सअप Hello Androdesh. Hi. Why what happened still farming? Nah, not farming. I am just completing the main storyline quest. Nothing else. Just chilling. बाय द वे गाइज हम सिर्फ एक सब्सक्राइबर से दूर है 125 के लिए मेक श्योर टू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल हम ऐसे ही स्ट्रीम करते मिलेंगे हर दिन हर रात हर शाम हर सुबह हर गली हर मोहल्ले में मैंने ध्यान से नहीं दिया मेरा ही खत्म होना हर गली हर रात हर शाम हर दिन हर सुबह करूँगा तुमको प्यार मैं क्या चूतियों की तरफ बोल रहा हूँ क्या पता फाइट की तरफ ध्यान भी नहीं मेरा भैंस की आँख तुम्हारे इधर आ तू इधर आ When did you start playing Genshin? मतलब पहली बार मतलब ऐसे बोल रहे हो या फिर अब का बोल रहे हो अब मैंने 6 बजे चालू करा और मैंने वैसे गेम जब रिलीज़ हुई थी ना PS4 पे मैं तब से ही खेल रहा था लेकिन बीच में 2 महीने के लिए एक महीना ब्रेक मतलब छोड़ ही दिया था खेलना में ऑलमोस्ट एंड्रोतेश अलग नाम है ज़रा सा पहली बार सुना मैंने अबे ऊपर 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 भाई ऊपर चलने का है हमको नॉइस स्टोरी लाइन क्वेस्ट करते जरा सा झूम लूं मैं अरे ना आई एम न्यू गेंशिन में क्या कुछ टेंशन वगैरह लेने की बात नहीं उल्टा जब तुम इस गेम में ऐसा ये हो जाओगे ना तब तुमको ज़रा सा तकलीफ होगी मतलब ओल्ड होने के बाद नए बंदों को ये बहुत ही सही गेम है नए बंदों के लिए ग्राइंड वगैरह में इतना मज़ा आता है ना इतना मज़ा आता है कि ध्यान ही नहीं रहता कि हम रिसोर्सेज पूरे तबाह कर रहे हैं अबे तेरी भैंस की आँख निकलना ऊपर क्या नीचे गिर रहा है चलो साइड से ही चढ़ते हैं फिर I'm single and I'm young. This game is so relaxing. Bhai, relaxing? No, not in Genshin. I am at AR7. So you are new on my stream. तो ऐसा बोल रहे हो क्या? Okay. Welcome to the stream, भाई. Make sure to like, share and subscribe. अब क्या ही कह सकते हैं? अबे चढ़ना अब क्या ही कह सकते हैं ना क्या भाई ऊपर चढ़ना किधर से चढ़ बे मेरे को ऊपर जाना है तेरी भैंस की आँख भाई इस गेम रिलैक्सिंग है इस गेम का प्लस पॉइंट क्या है पता है क्या इसका म्यूजिक कान पे पड़ जाए ना तो कान हिल जाए कान के साथ साथ सब हिल जाए AR-47 भाई आप तो गॉड लेवल पे हो
हम अब तो ऐसा मिड रेंज पे आ रहे हैं हम 35 पे है अब। हाँ अल्ट्रा इंस्टेंट अचीव कर लिया तुमने। एंड्रोटेश। एंड्रोटेश टेश है ना, एंड्रोटेश क्या है नाम, कैसे प्रोनाउंस करें? एंड्रोटेश। नहीं तो अपना असली नाम बता दो, नहीं तो मैं ऐसे ही एंड्रोटेश एंड्रोटेश करता रहूँगा। एंड्रोटेश। इसकी भैंस की आंख, इतना ऊपर चढ़ना है। grinding. Currently I am playing in my second account which is at AR21. Oh भाई बंदे दो दो अकाउंट क्यों करते हैं? मतलब हमको एक ही अकाउंट जम नहीं रहा और दो दो बंदे दो दो अकाउंट करते, क्या भाई? हो गया भाई, मेन क्वेस्ट स्टार्टेड। हमने सॉल्व कर दिया कब का ये? हाँ क्या ना, असेंशन मटेरियल ग्राइंड किया सुबह से, फिर आर्टिफैक्ट देके इधर उधर बॉस फाइट खेले, अनोमोकुलस सब कलेक्ट किया। एक अनोमोकुलस ले गए सिर्फ, यहाँ एक ही रहेगा सिर्फ। भाई हमने जेड चेम्बर का कर दिया है ना। Since we want to go to the Jade Chamber, heading to its location on the map is the sensible thing to do. Let's look around. There has to be a way up there nearby. पाइमन की माँ का भोसड़ा। बड़ ऐसा वो डोरा देखा है ना, डोरा। Can you see the fox? फॉक्स उसकी गांड के पीछे खड़ा होता है। Can you see the fox? क्या उसका फॉक्स का नाम क्या होता है? Swiper, Can you look at the stake? This is the stake. This is the stake और this is the stake. वो हाथ ऐसे ही घुमा के डाल ले, स्टिक मिल जाएगी तेरे को। Yes, this must be the way. आता मला जावं लागेल तिकडं। 160 resin, so too low. Very less gameplay, so I play in my second account sometimes. Okay. और मुझे ऐसा क्यों लगा कि तुम रशियन एक्सेंट में बात कर रहे थे? 160 resin so too low. Very less gameplay, so I play in my second account. I'm single, I'm not younger. बोला देना मुझे है अलविदा तुझे, तुझे जीना है। It only takes us up to here. Aw, if that wind current was stronger, we'd be able to reach the top in one go. गब बैठ चुप बैठ। Why? Or Paimon Paimon gets it. If it was a secret, Ganyu wouldn't have let us try to find it ourselves, right? ये स्टोरी लाइन में ये क्वेस्ट आने से पहले ही मैंने तो कंप्लीट कर दिया था ये क्वेस्ट। Alright, let's follow your plan. किया है भाई, वो आइलैंड है देख, हवा में उड़ने वाला किया है ना हमने। Oh, hang on a moment. क्या भाई? Look down there. Looks यही like है। we've gotten close to the Guizhong Ballista. Why don't we shoot you up to the Jade Chamber using the ballista? Oh, right. This method does seem a bit unsafe. Still, I do remember that ballista had a scope. Oh, that's right. Yep. Now that you mention it, we could use the Guizhong Ballista to see if there's another way up nearby. Gorex, जरा सा माइक वॉल्यूम जरा कम कर जरा। टाक खत्म इतना ही। हाँ सिंगल hello mic check. Hello mic check.
संडे संडे आज संडे। आई हैव डी लुक इन माई मेन अकाउंट। वाह वाह क्या बात है। मेरे पास जीन है, जीन 5 स्टार, सिर्फ एक ही कैरेक्टर है 5 स्टार। अरे मोहित भाई को है ना, कल उन्होंने विश लिस्ट किया तो उनको 2 बार चोंगुन मिला, और तेरे पास अभी क्लेम और एक भी नहीं है, वो बोल रहा था मैं। Halt! Halt! Who trespasses on these hallowed grounds? You're just passing through. Exactly. What are you talking about? We're invited guests. What makes you think you can treat us like this? No. जरा सा का रंग ही क्या पता Maybe मुझे। this was Ningguang's plan all मैं along. स्टोरी कर रहा हूँ तो जरा सा उधर ध्यान रहेगा मेरा। She pretended to invite us to the Jade Chamber, but set up a monolith ambush here to arrest us. I have 2 Now 5-star Iron's mad. Diluc and You, Child over there. This and is a wanted trick, Zhongli, isn't but it? I was How rolling for shameless. Diona and Child banner and got him. On Child banner and got him. Okay. What? We're Nice. just on guard Child duty. What do you mean shameless? सबसे बेहतर तो Child है, सबसे बराबर, सबसे अच्छा, सबसे extreme top Child है Child। What nonsense! Seize these suspicious intruders at once! Well, here they come. Line them up and knock them down. I hate Child. Why? Why do you hate Child? Do you don't like Child? Oh, तुझे बच्चे सॉरी चेष्टा मजाक कर रहा हो क्या? सीरियसली मत लेना सिर्फ भाई मेरा। आज क्या हुआ है क्या पता है, ऐसा ही मजाक कर रहा हूँ। निकल। मतलब चाइल्ड सही कैरेक्टर है, चाइल्ड क्यों पसंद नहीं है? एक तो हाइड्रो कैरेक्टर है, ऊपर से वो 2 वेपन यूज कर सकता है, तो सही है कैरेक्टर है वो। आई सीरियसली डोंट लाइक चाइल्ड भाई। अब क्या ही बोल सकते हैं। मतलब मैंने जो जितने भी दोस्त आए ना मेरे साथ खेलने इधर मेरे साथ, जब भी मैंने चाइल्ड को देखा ना उनको खेलते समय, भाई क्या गंदा डैमेज करता है वो, क्या सही चलता है। अब आपको पसंद नहीं है तो मैं भी क्या बोल सकता हूँ। To arms! Take the target alive! मुझे वैसे रेजर क्या पता पर, लेकिन मुझे रेजर बहुत पसंद है, सही कैरेक्टर। ना ये तो दे सकता है बराबर है, लेकिन डीपीएस के लिए बहुत सही कैरेक्टर है वो। और मतलब डीपीएस ही बन सकता है वो, दूसरा कोई रोल नहीं दे सकते उसे, लेकिन सही लगता है रे मुझे। अबे I'm single and I'm young। ये मेरी ऑफिशियल मेन डीपीएस है, देखो गाइस। डिलुक इज बेटर देन चाइल्ड। हाँ वो तो है, मतलब दोनों भी सही है रे। ऐसा एक ही प्लेयर सबसे खतरनाक ऐसा नहीं बोल सकते, सब किसी ना किसी में तो अच्छे है ही। अबे तेरी भैंस क्या निकल। अबे भाई 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 अबे उतर नीचे। अबे भाई बारबेडोस ग्रैंटॉस। भाई नीचे मत गिरना, सिर्फ वापस मारना पड़ेगा तुम लोगों को। इधर 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 निकलो। बारबेडोस ग्रैंडस बारबेडोस। मेरे ऑफिशियल के सब आर्टिफैक्ट स्मैश हो गए, पता है क्या?
स्पेशल मेरे अब भी इतना डैमेज दे रहे, इतना डैमेज दे रहे, लेकिन फिर भी अच्छे वाले आर्टिफैक्ट नहीं मिले मुझे। अब ढूंढने वाला, मतलब अच्छे वाला आर्टिफैक्ट चाहिए मुझे। दिलुक इज बेटर देन चाइल्ड। Stop. सभी What's all कैरेक्टर this सही है। about? ना रे, स्टॉप। What's all this about? Lady Coaching, these two strange people suddenly appeared. They seem to have designs on the Guizhong ballista. Who are you calling strange? You want to go to the Jade Chamber? Who are you? We're Hero. invited guests here to look for the Liyue Qixing. Who are you? Well, as it happens, I am one of the Liyue Qixing. Oh, I'm Kuching, the Yuheng of the Qixing. I know of you, traveler. You're Ningguang's guests, yes? Didn't expect to meet you here in the mountains. wow. Paimon didn't think we'd meet some super rich big shot out here in the middle of nowhere either. The Guizhong ballista in Tianheng Pass has long been in disrepair, and yet it was fixed in a single night. I came here to investigate that occurrence. अरे हमने ठीक किया है वो। These Millilith are just here to guard the scene, not to arrest anyone. So this was all a misunderstanding? Paimon never would have thought. Anyway, for a mortal to be able to repair an Adepti mechanism is quite the mystery, even to the Qixing. एक सीक्रेट बताओ क्या? हमने ही किया है वो। दीदी हमने ही वो बिल्ड किया है वो। तो That was... Huh? Oh, right. So, Lady Yuheng, might you have any idea why Lady Tianquan invited us to go to the Jade Chamber? Just call me Kuching. I'd say that Kuching. Ningguang's purpose is to request that the savior of Mondstadt take a more neutral stance. Or at least, to not wholly side with the Adepti. We're not taking sides. We spoke with the Adepti. They want to protect Liyue as well. When you say protect, you're referring to their sanctimonious arrogance, aren't you? Huh? You are mortals, and thus under their protection. There is no way they would have regarded you as someone with the ability to assassinate a god. Naturally, they would also regard Ningguang's locking down the area, questioning the citizenry, and pursuit of the assassin to be pointless work. Perhaps they even wonder if there might be a cover-up. I'll say it like it is. They're underestimating us. Well, you've got a point there. Still, this is the first time Paimon's seen a person from Liyue who doesn't respect the gods or the Adepti. Should I respect the shallow sense of time and condescension to mortals that has caused them to delay in moving against us, Qixing? Forget it. I shouldn't speak of them this way. This skepticism is mine alone, and Ningguang does not share it. Either way, I will admit that the actions of the Adepti this time were quite restrained. Rex Lapis's death is indeed an extraordinary circumstance. But to think that they would call for a council of Adepti rather than come down here directly. How surprisingly civilized of them. Any chance you could talk it out with them? Ningguang would prefer to negotiate, wouldn't she? Yeah. Well, for Ningguang, she would talk anything and everything out if she could. But I doubt we can do that here. The time of the Adepti has long passed. If even the Liyue Qixing don't want to face that truth, then what future is there for Liyue? Another super bold statement. I'll stop here. Honestly, I hadn't intended to say so much. But you're a good listener, traveler. मुक्का है वो, उसको बोलना नहीं आता, सिर्फ सुनता है चूतिया. You should both be off to the Jade Chamber. Don't be late now. Ningguang's schedule is packed to the gills all the way till next year. The cream of Liyue's mercantile crop all see ascending to the Jade Chamber as the greatest honor. Each brings rich gifts as they visit, all to curry a little favor with Ningguang. Favor? But, wait, that's right. Greeting gifts are a staple of Liyue's culture. We need to get one. Not to curry favor or anything, just to respect Liyue's culture. All right. You can decide on your greeting gift yourselves.
Let me tell you how to get to the Jade Chamber first. You didn't actually have to come to Mount Tianheng. Go back to Liyue Harbor. Find a guide at the Yuehai Pavilion. Well then. May we meet again, traveler. Well, that Yuheng may not respect the अब ये gods, 5 मिनट but लेगी, Paimon इसका thinks बोलना she's a चलेगा. pretty cool person. So, what should we give to Ningguang when we see her? Oh, right! Paimon dreamed of an amazing snack last night. Sugar-frosted slime! Paimon has a feeling that it would be perfect for a super rich person like Ningguang. Why don't we go with that for a gift? So do you have a recipe? Nope! But Paimon's sure that we just need to make it with some boom shakalaka. बूम शाकालाका तेरी बहन की आँख. बीम शेकेगी. Let's go gather ingredients. Time waits for no one, and neither will our riches. हो गया है तुझको तो प्यार सजना लाख कर ले तू. ये निकाल गाइस. 2 मिनट रुको, मैं 2 मिनट में आया. कोई तो नीचे आया है दरवाजे पर. देख के आता हूँ कौन है. It's time to move on. We shouldn't stay here. क्या कहते हो गाइज? क्या कल मेरे 130 सब्स हो पाएंगे? क्या श्रेयस धोत्रे का चैनल आगे बढ़ पाएगा? भाई फट गई मेरी. जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड. ऐसा गौरांग द कमेंटेटर ने कहा. गांड फट गई सीढ़ी ऊपर नीचे करके. Look for the ingredients Paimon needs. Hey hey. Bye. Look at that Okay. slime. It looks crystal clear and very Wow. delicious. स्लाइम बीम कुछ भी खाते रे ये. छी. स्लाइम खाते हो? Swift and merciful. स्लाइम खाते हो? हमारे पास पहले से ही है. टेस्टी स्लाइम बोल रहा हूँ. हो गया है तुझको तो प्यार. Huh? Is it just Paimon? Or is there a sweet fragrance in the air? भूखड़ कहीं की. Huh? Did you hear that? It sounded like someone calling for help. It seemed like it came from those... Uh-oh. It looks like the treasure hoarders have locked someone inside. हार माने बाबा ने ऐसे चार तफू यार बिंगो पजे जार बेंगर माने hope I was touching the fair माने. Reveal thyself. You're open. इसकी भैंस क्या. You're open.
भाई एक ही झटके में दिन हो गया रे सही है A touch of frost. हजार का डैमेज जाने दो Thank you for your help, kind travelers. If you hadn't come to my aid, I surely would have rotted in this cell. Those treasure hoarders, when their mood was good, they'd rearrange those pots of sweet flowers. When they were in a bad mood, they'd rearrange my face. Aw, it was nothing. No need to thank us all at once or anything. I understand. Don't worry, I will compensate you both. Don't say that. I only escaped this predicament because of you. I'm Meng Dan, a supplier for Mingxing jewelry in Liyue Harbor. I often walk around these mountains in search of antiques. I never expected that those treasure hoarders would have their eyes on the same ruins that I had. Before I knew it, they'd caught and imprisoned me. गवारा म्यूट करो तुला Anything that you lack. Antiques, treasure, various knickknacks, you name it. Well, as long as you want what I have to offer, of course. Your goodwill is good enough for me. Wait a moment. Actually, we are looking for something. Oh? And what might that be? Do you have a box that can store presents? We'd like a pretty one. The kind that you can use to store snacks. Of course we do. How can one sell antiques without gift boxes? At Mingxing Jewelry, we have the best gift wrapping service in the 7 nations. Now just give me a moment and I'll let the boss know. Great! Paimon sugar frosted slime now comes in a beautiful package. Sesver adanam didveder selam durmak kökami patlamaya devam. Sos yine huzurlarına. Harmanem babanerde çarşafı yerbing bu padekler bender mane vappay başçatçılda fermane sabıl gastın yallan karbane siyasi penenti siyasiyen diye क्या बोल रहा हूँ मुझे पता नहीं धूम मचा ले धूम मचा ले धूम मचा ले ये है ना Sesver Adanam. Hey there! A guy called Meng Dan told us that we could get a nice and shiny box from your store. Uncle Meng already told me about it. Thank you both for saving him. Many of the best goods in our store were found by Uncle Meng. If anything were to happen to him, it would be impossible for us to continue doing business. Here, this container is itself an antique, with at least 140 years of history. It's already been cleaned. Will it do? Yep. It's great! Hang on a moment. Could we borrow one other thing? Sure. Please help yourselves. As long as it's on our shelves. Traveler
here! This clay pot looks really awesome. If we use an antique as our mixing bowl, we should be able to make a great snack. It's done! The one and only sugar-frosted slime! Carefully now. Into the box it goes and dust it over with a bit more powdered sugar. Oh, yes. You might want to use these 2 freshly picked flowers as decorations, too. Woohoo! It looks beautiful! Great! Now that we've put all that we've got into this box, let's go to the Jade Chamber to see Ningguang. 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 Ningguang gong gong. Sesler adanamdi ve de selamdırmaktı komik patlamaya devam. किधर से जाना है? इधर से या इधर से? What goes on in the mind? According to Kuching, this is what we should say. Excuse me, do you sell the moon here? Yes. How many would you like? It's not convenient to speak of numbers here. Ah, well said. Please, use this to ascend to the chamber. Yes, speaking of which, are you two the guests that Lady Ningguang has arranged to meet with today? Yep. And yet the code they used was not the one for guests, but for the Yuheng. What's going on here? I've been waiting for you, returnee from Joyun Karst. It's Ningguang! Since this is our first meeting, we've prepared a gift. I hope you like it. Oh, for me. You have my thanks. It seems that I have made things difficult for you, considering that you were supposed to be my guests. Oh no, it's nothing. I'm glad you like it too. This palace floats in the skies, higher than the peak of any mountain. From this vantage point, one may survey all of Liyue. I have been gathering the funds necessary to build it from the time I began learning the merchant's craft. And since becoming the Tianquan, I have spared no effort in hiring the best craftsmen to constantly extend it. At first, it was but the size of one room. Now, it is large enough to blot out the moon in the skies above Liyue. One day, I believe it will overshadow all 7 nations. I got flower of life today. Wow. आर्टिफैक्ट है क्या? सॉरी मुझे पता नहीं है सिर्फ फ्लावर ऑफ लाइफ फ्लावर तो आर्टिफैक्ट ही है लेकिन Not many from outside Liyue earn the right to ascend. But I have been in correspondence with the acting Grand Master of the Knights of Favonius, who spoke highly of you. As such, I have been putting eyes and ears out ever since you reached Liyue. What? And I finally got wind of your movements when you were on the way to Wangshu Inn.
Was Vergoldet one of your people? Just Vergoldet? No. 2 minute हाँ. Everyone at Wangshu Inn is one of ours. At the Guizhang Ballista, yes? You weren't peeking on us from the skies the whole time, were you? I fear that peeking would have been a little difficult from this altitude. Our eyes and ears are more than sufficient. You two are very interesting people, after all. It would be natural to take an interest. Well, I wouldn't expect you to trust us, considering that you have had far more interactions with the Adepti. The reason I invited you here was to clear up some misunderstandings. Genshin Impact. गुस्सा तो नहीं आया ना भाई? मुझे सच्ची में पता नहीं, बाकी कुछ नहीं. Hi Crazy Bunny, hi. Hi Huko, hi. I believe that you've heard of the Archon War. Many gods used to walk this earth, and many long wars were fought between them that did not abate until 2,000 years ago. Much blood was shed, and many lives were lost. In the end, only 7 victors remained standing in Teyvat. They built cities and nations on the corpses of the vanquished, and thus began the era of the 7. GTA खेलो. GTA खेलेंगे, मगर अभी नहीं. अभी एक क्वेस्ट कंप्लीट करना है. ये स्टोरी क्वेस्ट है ना मेन, तो इसलिए ज़रा सा फोकस कर रहा हूँ इस पे, इस स्टोरी लाइन पे ज़रा सा समझ. मतलब जब मैं पिछली बार स्टोरी क्वेस्ट किया था ना, तो वो 1 महीने पहले किया था. तो अभी ज़रा सा स्टोरी मेरी धुंधली हो गई. मुझे इतना कुछ पता नहीं है, इसलिए मैं ज़रा सा स्टोरी पे ध्यान दे रहा हूँ, क्योंकि पिछले वाला कुछ याद आए तो अच्छा होगा, क्योंकि लिंक बैठानी है एक स्टोरी की. तो इसलिए शाम को ये खेल रहा हूँ. नहीं तो भाई अपनी मतलब चिल करते, कुछ तो करते बैठते, फिर ऐसा करते. वेयर आर यू फ्रॉम? आई एम फ्रॉम पंढरपुर. मेरे सिटी का नाम है, सोलापुर डिस्ट्रिक्ट में आता है, महाराष्ट्र. You can see Goyun Stone Forest from here, I trust. It is no natural rock formation. Those are giant spears of rock hurled by Rex Lapis during the war. स्टोरी लाइन बोर्ड होता है, इसलिए बाकी कुछ नहीं. हाँ बराबर है. वैसे इस गेम का मेन सीन तो यही है, आर्टिफैक्ट वगैरह, ग्राइंड वगैरह ये सब. लेकिन अब गेम है तो ज़रा सा स्टोरी भी याद रहना चाहिए, इसलिए कर रहा हूँ. नहीं तो बाकी कुछ नहीं. अपना काम यही है कि आओ ग्राइंड करो, उसी में मज़ा लो, मस्ती मज़ाक करो चैट के साथ. ओके, तो वही, बाकी कुछ नहीं. GTA ऑनलाइन क्या GTA खेलेंगे हम, ऐसा कुछ नहीं सीन. Beneath the spears लेकिन lie पब्लिक those इतनी देखने cast नहीं down आते ना by GTA Rex को. Lapis in those days, gods that failed to seize the title of Archon. Not only is it true that gods may die, but so too has the membership of the 7 changed over the last 2 millennia. Rex Lapis's passing is an unimaginable disaster for Liyue, but the Order of the 7 will not collapse simply because of that. मुझे चैनल पे मेरे जितने भी बंदे आ रहे हैं ना, मतलब जितना भी मेरा चैनल ग्रो हो रहा है, वो सब गेंशिन की वजह से हो रहा है. मतलब जो भी बंदे आ रहे हैं वो गेंशिन के बंदे हैं सब. तो GTA खेलेंगे, मतलब ऐसा ही नहीं कि सिर्फ गेंशिन ही खेलने वाले हैं, दूसरे गेम भी ट्राई करेंगे. लेकिन अभी चैनल का मतलब बेस बनाना चाहता हूँ मैं. एक अच्छा बेस बन गया ना, बंदे आने लगे, रिकमेंड होने लगा अपना चैनल, ज़रा सा यूट्यूब के एल्गोरिदम में बैठ गए, तो एक नंबर. सब गेम ट्राई करेंगे, फिर हॉरर वगैरह सब अपना ही है फिर राज. Another Lord of Geo will arise sooner or later. Yet, how are we to forget Rex Lapis? When that time comes, the relationship between the people of Liyue and the gods and Adepti will surely be different from before. Even in a new era, the Liyue Qixing remain Rex Lapis's former subjects. Do you really think us capable of having played a part in his demise? Of lacking the foresight to see the certain repercussions? That day at Yujing Terrace, it was also very sudden. Even I was caught completely off guard. You were there, you no doubt saw.
But our enemy has long lain hidden within the harbor. If we do not act against them now, they will surely gain the upper hand. ये वाला स्टोरी मोड अभी तक का बेस्ट है. हाँ, मतलब ये वाला जो चल रहा है वो बेस्ट है, ऐसा बोल रहे हो क्या? गौरंग बोल रहा है कि इसमें पता चलेगा कि जोंगली क्या है. Hiding the Exuvia was a necessary maneuver to take the initiative back, to play the spider while our foes scurry about. Who's this enemy you're talking about? What do you think, traveler? Yes. Huh? What are क्या you two क्या क्या talking मैंने about? मैंने कुछ देखा नहीं. क्या किया मैंने? Well answered. Huh? The scenery out here is fine indeed, but the wind is a little strong. Our preparations to receive guests within are complete. So please, this way. वैसे गेस करना इजी है. मेहरबानी नहीं तुम्हारा प्यार मांगा है, तुम्हें मंजूर है तभी तो यार मांगा है. बैरों के दिल से मेरे शहर से मैं कसम रिश्ता जोड़ूं. Wowee! What a huge hall! Paimon's never seen such a fancy place before. कुछ भी कर दो यार, इनके जापानीज जो कलाकृति, मतलब क्या रूम वगैरह जो इनका सही है रे. कितना अच्छा लग रहा है देख. बारबेटोस ग्रैंटास. Be at ease, you two. Make yourselves at home if you wish. Can we really? I have invited you two here as friends. And when friends come over to play, our enjoyment comes first. Naturally. Whoa! Isn't this that legendary wall? Why, you've kept your ear to the ground, I see. That's because even the storytellers are talking about. That's because that wall records Leo's secrets. Merchants have always been attracted to secrets. But the secrets of the mercantile world are of no interest to you, are they, traveler? You're rather special, really, and I think you're quite aware of that. If possible, I'd like to have your trust. But if you were to choose the more trustworthy person between myself and Kuching... You'd pick Kuching? I originally thought her a bit too hard-headed. With someone of her character on the Qixing, I've had some extra messes to clean up behind the scenes. But after she said those words, the time of the Adepti has long passed. If even the Liyue Qixing don't want to face that truth, then what future is there for Liyue? Well, I must say that quite a few of my doubts have been dispelled. I won't deny that Rex Lapis's passing seems advantageous to us. But, for Liyue's sake, we cannot allow ourselves to be shackled by rumors of our usurpation of power. Indeed. It seems that you understood what I meant to say from the very beginning. I called for the gag order and for the Exuvia to be hidden to temporarily stabilize the situation, and also to prevent something similar to the incident in Mondstadt. With Rex Lapis's death,
The Fatui have busied themselves with many clandestine actions beyond their diplomatic remit. As the Tianquan, one responsible for Liyue, I cannot be too concerned with appearances when opposing them. Allowing the rite of parting to take place was also meant to buy some time for us to take control of Liyue's administration. It's exactly as Zhongli said. The Qixing only provided the venue for their rite so they could use us for their own ends. Wait, that's right. Speaking of ends, could I say one other thing? Of course. Paimon's heard that anyone who sends a greeting gift gets a little something in return. So, does that include us? It's all right. I like direct people. Well, we have made quite a bit of trouble for you recently. How about this? You can pick any one object here as you please, and you may take it with you. Yay! Paimon was just waiting for you to say that! Let's see, what should we get? One of the sheets on that wall! Don't look at Paimon like that! One of these sheets of paper will sell for crazy prices, even if it's only as large as Paimon's fingernail. Just imagine how much more a whole untorn sheet would sell for. Let's grab one! The biggest one! Hello, Indra. Huh? Well, that was an easy search. The biggest sheet is right up there in the most obvious spot. Let's go with that one. La 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 la. Let's see what's written on it. Huh? There's a place marked with a circle on here. Oh, could it be treasure? Whatever it is, it better make us filthy rich. Let's see what's written over here. Sigil of permission, something, something, Fatui, research, copy. Huh? Aw, that doesn't sound like treasure at all. This piece of paper shows that a Qixing spy discovered traces of classified Fatui research on the Sigil of Permission. Oh, Ningguang did say that the Fatui have been up to all kinds of mischief in the shadows of Liyue. Spreading rumors, wanting to get their hands on the Archon's body and whatnot. But research on the Sigil of Permission? Paimon wonders what they're up to. Speaking of which, there's also some connection between you and the Sigil of Permission. Seems there's still more for us to find out. Oh, you really think so? Well, should we not go then? Oh, so you're saying that it's precisely because we can't completely trust Ningguang that we should confirm the truth of what she says for ourselves. That's way out of Paimon's league. Paimon thinks she's been nothing but good to us. Anyway, we'll see if you're onto something. Before we look for Zhongli at Dihua Marsh, let's go to the place marked out on these papers and see if the Fatui really are up to no good there. मेहरबानी नहीं तुम्हारा प्यार मांगा है तुम्हें मंजूर है तभी तो यार माना है हाल दिल तुझको सुनाता दिल अगर ये बोल पाता बाखुदा
Where are my glasses? Glasses. And why I am sitting in dark? दो मिनट गाइड्स, 2 मिनट. ज़रा सा चश्मे पुसने क्या, ज़रा सा चश्मे ये कर देता हूँ. चश्मे मतलब नंबर भी नहीं है मुझे कुछ ऐसा, लेकिन अल्ट्रा वायलेट लेंसेस, प्रोटेक्शन फॉर माय आईज, मेरे आंखें खराब ना हो इसलिए. चूतिया लग रहा हूँ, मतलब चूतिया कुछ भी बात कह रहा हूँ मैं, क्या भी बोल रहा हूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा. इसकी भैंस की आँख. ओ हाल दिल तुझको सुनाता, दिल अगर ये बोल पाता, बाखुदा तुझको ना जाना. अगर ये बोल पाता, वक्त समय I do hope the Knights of Favonius are all working hard. गाइस हम सिर्फ एक ही सब्सक्राइबर से दूर है 125 के लिए. अगर आपको मेरी स्ट्रीम अच्छी लगे तो मेक श्योर टू लाइक सब्सक्राइब. हम ऐसे ही स्ट्रीमिंग वगैरह करते रहते हैं, गेंशिन, अदर गेम्स आल्सो. सो मेक श्योर टू हिट लाइक सब्सक्राइब. अब मैं भी फिशल को लेवल 60 कर रहा हूँ. नाइस. फिशल है रे, फिशल कैसा पड़ेगा, फिशल है अच्छी कैरेक्टर, मुझे तो बहुत सही लगी. मतलब मेरा तो DPS ही है तो मुझे सही लगेगी, लेकिन है बहुत सही लगी मतलब फिशल. हेड टू द लोकेशन मार्क पेपर नाइस. ये बोल पाता बाखुदा. वाह, अब जियो लेना पड़ेगा है मुझे. ये बोल पाता वक्त समय. There really were Fatui at the location written down on this piece of paper. देखो मेरी, देखो. And they look really mad at us too. फिशल देखो मेरी, फिशल डैमेज कैसे कर रही है. भाई 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 मरेगा रे मैं ऐसा तो. But in late game you will need a 5-star DPS. I got Razor Fisher time pass के लिए. Okay, nice. 5-star कैरेक्टर लगेगा भाई सारा, वही तो बराबर है. I swear by my sword. ऐसा मरेगा क्या रे, लेकिन ये No rest for the wicked. अरे 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 अरे. One with my blade. अरे 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 अरे. भाई मैं फंस गया रे इधर, बसर में हूँ भाई. आजा इधर इधर आजा. आतिश ब्रो, आई जस्ट स्टार्टेड दोस गेम्स 3 weeks ago एंड मैं टाइम पास सिंगल समन कर रहा था और मेरे को डिलुक एंड चाइल्ड मिल गए. वाह क्या नसीब है भाई, क्या नसीब है, मतलब सही नसीब है. क्या नसीब पाया आपने. भाई 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 बसर 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 बसर. इधर 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 आता.
ब्रो नो स्कैम प्लीज। देख विश्वास में पड़ रहा हमको कि वाह चोंगिन मारा। वे तेरी भैंस क्या की तरह अंदर जा। इधर इधर बाहर 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 बाहर। उधर महारानी साहिबा उधर उधर मारना इधर नहीं उधर। निकल निकल भाई जाए क्या हाँ धूर मारने की मशीन लाया ये था। Oh, oh no. By royal decree. भाई मैं तो गया लग रहा है। भाई 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 I swear by my sword. A touch of frost. This is trouble. गांड में मार के मिनी क्लिप इनकमिंग। मिनी क्लिप अबे मर क्या अबे हाँ? भाई नेट गया क्या? नेट गया क्या मेरा? किल हाइड्रो 1 he is healing everyone. Let's move. Should get careless. Have a load of this. Fight my blade. You need to hurry up. भाई ये शील्ड ब्रेक नहीं हो रही इसकी। वाह अबे तेरी भैंस की आंख रुक रुक तेरी भैंस की आंख। You need to hurry up. अबे इसकी शील्ड क्यों नहीं ब्रेक हो रही है? Very clean. Attack. This was well done. You need to hurry up. इधर 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 भाई मैं मरूंगा तो मरूंगा फिर भाई। This was well done. You need to hurry up. भाई इसकी शील्ड क्यों नहीं ब्रेक रही? वाटर विल ब्रेक इट। वाटर हमारे पास तो ये है। कैरेक्टर भी नहीं बदल सकते यार। बार बार लेने चाहिए थी फिर मुझे। Scourge of evil. वाह चोंगिन दूसरी बार मरा भी है। No rest for the wicked. This was well done. मारा एक मारा एक मारा एक मारा। पानी तोड़ना है तो अबे चूती है नहीं तो नीचे उतर। No rest for the wicked. भाई चलो निकलते इधर से। पहले ये करके आते। गेम बिकेम लॉट इजियर व्हेन यू डोंट यूज फिशिल। चलो
जरा सा Another test subject. स्टैचू के पास चलते हैं, हेल्थ गेन करते हैं, बारबरा को टीम में लेते हैं, फिर आते हाल दिल तुझको सुनाता दिल अगर ये बोल पाता बाखुदा तुझको है जा जाना ये अगर ये बोल पाता मांग लाता बाखुदा। फायर टाइप की कुछ जरूरत ही नहीं ना फिर। तू आजा मेरे माही। Wish me luck. सब लोअर है लेकिन क्या करें। I do worry about the well-being of. मेरा इश्क। भाई मैंने असेंड क्यों नहीं किया रे अब तक। वाह भाई वाह, असेंड क्यों नहीं किया। ये तो मैं क्या कर रहा था। जितना हो सके उतना डाल रहा हूँ मैं अब इसमें। 70 करो, एक नंबर। फिर मोहरा नहीं है इसकी भैंस क्या। तभी बोल रहा था मैं क्या क्यों नहीं किया। मोहरा नहीं है। वाह भाई मोरा नहीं है। मोरा मोरा नहीं है। मोरा जिया। वेट 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 वेट, जिनके आर्टिफैक्ट देख लो। ये क्या है, इंस्ट्रक्टर। ये क्या है, ट्रैवलिंग डॉक्टर। ये क्या है, एग्जाइल। ये क्या है, बर्जरकर। ये क्या है, बर्जरकर। यूज सिजिल्स। सिजिल्स यूज कर सकते हैं, ऐसा है। लेकिन करे क्या, करे क्या जी। कृतरेत, कृतरेत ये दे रहा है ना कृतरेत। फिर टैग प्लस कृतरेत। ये दे रहा यूज कर फॉर मोरा। वही तो यूज कर सकते हैं मोरा के लिए, लेकिन कैसा होगा ये पता है क्या। इंस्ट्रक्टर यूज किया मैंने। इंस्ट्रक्टर इंक्रीजेस एनिमल मास्टरी बाय शाड़ी शाड़ी शाड़ी। हाल दिल तुझको सुनाता दिल अगर ये बोल पाता बाखुदा तुझको है जा जाना ये अगर दो वक्त आता वक्त समय वो मांग लाता खुदा तुझको है जा जाना। जाने दो। चूतियों की तरफ जिनको का आर्टिफैक्ट डाले रे, बहुत ही चूतिया आर्टिफैक्ट है जिनके लिए। इसको हम क्या दे रहे हैं, अटैक। टुडेज ग्लाइडिंग चैलेंज नीड हेल्प, ऑलवेज अमन ऑलवेज। ग्लाइडिंग चैलेंज में क्या हेल्प भाई, इजी है वो तो। लेकिन तुमको क्या हेल्प चाहिए बताओ, करेंगे मदद। गिव योर अकाउंट। एलिमेंटल मास्टरी इंस्ट्रक्टर। जाने दो, मारने के देखता हूँ मैं।
आर्टिफैक्ट की माँ की आंख। सीधा अकाउंट ही मांग रहे हो भाई। गाइस जो बंदे नए हैं स्ट्रीम पे, मेक श्योर टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। और हाँ यही 125 की बहुत करीब है। अगर आज 125 हो गए तो भाई स्वाद आ जाएगा, स्वाद, मज़ा आ जाएगा। क्या ही कह सकता हूँ मैं। अगेन विंड कैचर गैजेट लेना वाले थे। अरे रे 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 भूल गया भाई, विंड गैजेट भूल गया भाई डैमेज क्यों नहीं कर रही? हाँ ये वैसे कर रहा है। ओहो ये आप बोलते ना, आप बोलते डैमेज। अब देखो ये डैमेज कैसे कर रहा है, देखो 900 900 1000 का। ये भैंस की आँख तेरी माँ की। अबे चूत फिशिल तेरी भैंस। मारेगा मारेगा जंगली, तू भी जाएगा। अरे तेरी बे निकल भाई बात। भाई क्या चल रहा है रे देवा देवा देवा। भाई कुत्ते की मारो, कुत्ते की तरह मार रहे, कुत्ते की तरह। हाँ अब मारा वो। अब इसको मारने के लिए तो फायर टाइप चाहिए था ना। ये शील्ड तो नहीं तोड़ेगा इसकी। 9 अर्चे। मरेगा रे मैं। अबे बेस क्या? चल भाई मैं। हाँ अपने आप। तू जाओ बाबा, तू गन ही चला। तेरे को लॉन्ग रेंज से ही देखूंगा मैं, जितना हो सके उतना मारूंगा लॉन्ग रेंज से। विच कैरेक्टर आई शुड लेवल अप, फिशिल और एम्बर? अरे फिशिल करो भाई, एम्बर को क्या देख रहे हो भाई? एम्बर टट्टी कैरेक्टर भाई। कौन सा कैरेक्टर? टट्टी कैरेक्टर। मैं कौन सा यूज करूँ अब? भाई इसको फायर टाइप कैसे रे, क्या करूं? ऐसा मरेगा ही नहीं फिर। मिडनाइट फैंटास्मोगोरिया। मिडनाइट फैंटाम ऐसे कौन बोल रहा है? अबे स्टैमिना इतना खत्म हो रहा है जल्दी, कुछ समझ में आ रहा है गाइस। कभी कभी लगता है आर्टिफैक्ट का ही सब दिमाग में। हाँ डालेंगे। हाँ आर्टिफैक्ट नहीं भाई, फिशिल अच्छी है भाई, फिशिल अच्छी है, कुछ भी करो फिशिल अच्छी है। फिशिल अच्छी है, फिशिल अच्छी है। ऐसा नहीं कि फिशिल अच्छी है, फिशिल बहुत अच्छी गेम है। मेरी डीपे से है यार, कुछ कुछ सही बोलो, अच्छा बोलो। मरना रे, मर मर तेरी भैंस क्या मर गया। Disgusting noise. दिल तुझको सुनाता, दिल अगर ये बोल पाता, बात तुझको है आ जाना। अगर ये बोल पाता, वक्त मांग लाता। Swift and merciful. Submit for judgment. मर गया मादर को। मरेगा 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 मरेगा।
वाह वाह बारबरा, सही बारबरा. Join my world level 3 easy game. Easy game. कर सकते हैं वैसे ज्वाइन, लेकिन ये क्वेस्ट जल्दी से जल्दी करना है ना. 8 बजे से पहले हो गया तो एक नंबर, नहीं हुआ तो क्या ही कह सकते हैं, कल ही करेंगे फिर. अबे क्या यार, कौन सी फाइट, अब किधर की फाइट? सब तो मर गए. इसके लिए इतना 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 घिसना पड़ा मुझे, इतना. And some stacks of blank paper too. What are they for? Paimon's seen this pattern before, but where? Oh, Paimon knows. It looks just like the sigil of permission the child gave you. But how did a relic of the Adepti end up in the hands of someone like Child? Oh, that's right. Cloud Retainer said that when the Lord of Geo created the Sigil of Permission, it wasn't to be used as some old relic. Talismans like that were once used in the Archon War to channel divine powers. Maybe the Fatui are copying the Sigil of Permission in hopes of achieving a similar effect. Being able to channel divine power in battle? Whew, that sounds pretty dangerous. And the plot thickens. We'll need to keep an eye on Child, that's for sure. Alright, that's enough sticking around here. We gotta go meet up with Zhongli soon. The last stop on our rite of parting preparations tour is Dihua Marsh. Let's go! Paimon! निकल. हाल दिल तुझको सुनाता ये बोल पाता खुदा तुझको है आ जाना बेखबर ये बोल पाता वक्त समय मांग लाता खुदा तुझको. पानी पी लो, पानी पानी पी लो गाइस. चुपचाप साइड से निकलो. कौन मारने बैठेगा वो जब? वाह, सभी बैठे रे. Zhang the Lee. Right on time. I myself only arrived moments ago. Did you enjoy your visit to the Jade Chamber? It was so big and pretty and expensive. Paimon's never seen such a fancy schmancy place before. Indeed. It's second to none in all of Liyue. Then you met with Ningguang, I trust? What did you talk about with her? She's super rich and so generous. Paimon thinks she's very friendly. Yeah, his take on Ningguang is quite different from Paimon's. He thinks that even the tactless Yuheng is more trustworthy than her. Oh. So you also met with Keqing then? She said the time of the Adepti has long passed. If even the Liyue Qixing don't want to face that truth, then what future is there for Liyue? No respect for the divine. Indeed, contrary to the ever-bold Keqing, Ningguang is more of a businesswoman at heart, though they are both members of the Qixing. Although she's friendly, there's no way of clearly discerning her true intentions. Yes,
She has only relied on herself to rise to her current position. No ordinary person could ever achieve that. It's said that she's the one behind the constant expansion of the Jade Chamber. It's the second with most full important swag thing to her. and owner Even if be she ever like gave up the position of Tianquan, तुरन she मार would never के give up the Jade Chamber. जाते हैं तुरन तुरन तुरंत तुरंत बोल रहे हैं तुरंत मार के जाते हैं कुछ समझ में आया तुरन का क्या मतलब Especially with full swag and owner be like तुरंत मार के जाते हैं The Jade Chamber is only second. What's the most important thing to her then? Why, Mora, of course. All Ningguang talked about was the Fatui this and the Fatui that. She said that after Rex Lapis was murdered, the Fatui have constantly been trying to sink their fingers into Liyue, and that they aren't to be trusted. That is how the Fatui have always been. It doesn't surprise me in the least. By Ninari. No matter what they may be planning, you must be careful when dealing with the Fatui. Always be on your guard. So, is there anything we need to get for the rite of parting in Diwa Marsh? Yes, as a matter of fact, there is. Today, we'll be gathering wild glaze lilies. Glaze lilies? But why did we come all the way out here? Doesn't the garden in Yujing Terrace have some? Even Qingsa Village has glaze lilies. Oh, right! Paimon remembers that Madame Ping is always tending to flowers. Maybe we could ask her. No. Those lilies have all been gardened by people. They won't do it all. Official with full swag and owner be like touring मार के जाते हैं Dihua Marsh used to be full of glaze lilies. It is a sort of joyful flower that listens to human song. ऐसा लग रहा है चैट कर रहा है कोई मेरे साथ मतलब चैट हो चुकी है कब की आ चुकी है लेकिन ऐसा लगा कि आप भी पॉप अप हुई Before the Archon War, Dihua Marsh was all dry land and fertile soil. But the war caused landslides, and the land was flooded, turning it into the marsh you see now. Nearly all the glaze lilies were wiped out. आप समझ में आया Official with full swag and owner be like टर्न मार के जाते हैं Of course, there are some kinds of flowers that have been preserved and gardened by people in the city. But very few people know that glaze lilies may still be found in the wild. Wild glaze lilies have the strongest fragrance. If we want to follow the true tradition of the rite of parting, we must grind up the wild lilies and place the powder in a censer of everlasting incense. But I'll need your assistance in gathering these flowers. You mean you need me to pick them? No, I need you to sing to them. Singing to the flowers will make them more fragrant. Huh? So how good is your singing? I can hold a tune. Really? Why doesn't Paimon believe you? We'll only know once he starts singing. हमें भी सुनने गाना. Search for glaze lilies with jungly. दिल तुझको सुनाता दिल अगर मैं बोल पाता बात It's time to sing. Whenever you're ready. Da 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 da. Wow. What happened? These flowers are jumping. They look really angry. Is this because you sang a song for Mondstadt that they don't understand? भाई जंगलिंग नहीं चाहिए था Barbados, guide us. अरे
इधर इधर महारानी साहिबा उधर। पानी में भाई इसके आँख गया मैं गया। अबे सरक अबे गया फिसल गई। One shall descend once again. Submit for judgment. आई शपथ क्या मार रहे रे भाई। भाई तेरी भैंस क्या कर रही है? अबे क्या आलेगी ना साहिबा है भाई। चलो भाई ऐसा क्यों लग रहा है मुझे? बहुत ही हार्ड हो गई गेम या फिर मैं ही चूतियों की तरह खेल रहा हूँ? भाई बार को भी बढ़ाना पड़ेगा कुछ भी कर दो। अबे तेरी भैंस क्या निकलने तो दे साइड में। भाई कुछ भी कह दो यार, कुछ भी कह दो। अबे तेरी भैंस। अरे रे भाई जब फायर यूज करता हूँ तो आप पानी लगता है, पानी यूज करता हूँ तो फायर लगता है। भाई हाँ गो बार गो निकल इधर से। क्या भाई क्या सीन है? अबे चल वाह टाटा। क्या भाई क्या सीन था वो? इतना गंदा। वाह भाई क्या अबे चल भाई जल्दी पनवेल निकलना है। फ्लावर को मारना पड़ेगा। क्या सीन है? पानी में जाके आओ। वाटर वर्सेस आइस गुड फाइट। वाह वेल जीन को निकालो, जीन को नहीं निकालो। क्या करूं? शांगली प्लस I can't wait any longer. तुझको सुनाता दिल अगर के बोल पाता बाखुदा। Why don't you keep food? कभी जरूरत ही नहीं पड़ी तो रखा ही नहीं। अब बहुत जरूरत है लेकिन क्या ही कर सकते हैं।
2 मिनट के लिए क्या रुका भाई? पूरा हेल्थ जा रहा है भाई, पूरा हेल्थ जा रहा है। टारगेट एबनॉर्मल, क्या एबनॉर्मल? क्या इन तीन पे एबनॉर्मल यार? किधर से किसको टारगेट करूँ मैं? निकलो अभी तेरी भैंस की आंख भाई। खराब हो जाते हैं भाई सिर्फ ऑमलेट खाने से। अल्टीमेट कब आएगा बे? अल्टीमेट कब आएगा? अल्टीमेट चाहिए भाई। गई चंगलिंग भी गई, चंगलिंग भी गई। बारबरा पे भी ध्यान नहीं जा रहा मेरा। निकले भाई। अरे रे 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 गावत हायर लेवल पे बहुत जरूरी होता है, जरूरत होगी। खराब हो जाते हैं भाई सिर्फ ऑमलेट रखने। यूनिट डील ब्रो, लेट्स पे। लेट्स पे। पैसे किसके पास है भाई? सब मर गए रे। अब जा सकता हूँ क्या मैं? अबे तेरी भैंस क्या यार, फंस गया मैं इधर। वाह भाई, दोनों आ रहे। तेरी भैंस की शंगलिंग आजा। वाह वाह, क्या नूब की तरह खेल रहा हूँ भाई, क्या नूब की तरह खेल रहा हूँ। हाँ 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 हाँ, इधर मरेगा। अबे एक मरा। फिशिल तो ये हो गई रे। अबे सरक बे।
निकल बे भोस सही के। वीडियो यूज करने के समय आ गया है। वीडियो यूज करने का समय आ गया है, वही सोच रहा था मैं। अब वीडियो यूज करने का समय सही में आ चुका है। अबे किधर खत्म हो गए, किधर किसको मारो अब मैं? किधर दिख रहा है तुम लोगों को? भाई क्या सीन है रे? देवा देवा ओ देवा, अबे किधर है? रुको जरा घूम के आया मैं। डिफीट द अटैकिंग मॉन्स्टर। मॉन्स्टर ही नहीं है क्या? कहाँ से अटैक करूँ, क्या करूँ? गया भाई, मैं तो गया भाई, अब तो गया भाई मैं। अबे अबे भाई चांगलिंग को कितना कुत्ते जैसा मारता है ना ये भाई, कुछ भी कह दो। इधर इधर क्वेस्ट एरिया में आ भाई, नहीं तो आप फिर भी और एक बार लड़ना पड़ेगा इससे। इधर आ भाई, इधर ओ भाई इधर हाँ अकेला इधर लड़ू दे रहा, अकेला इधर ग्लिच हो गया। नहीं आए, वापस आए इसकी वजह से। आप इधर अन्ना, ओ अन्ना इधर आ, इधर ओ महाराज इधर आ जाइए। खत्म भाई, एक बार का मर गया। भोशे का Those weren't glaze lilies. Glaze lilies wouldn't hit people. This little monster is known as a whopper flower. तेरे whopper flower ने मार दी थी हमारी अच्छे से तेल मिट लगा के। Strange. The glaze lilies used as a disguise were buried with the whopper flower for too long. The result seems to have surprisingly potent medicinal value. Let's collect what we can of these petals. Well, that's nice and all, but will those petals be useful for the rite of parting? Unfortunately, no. That's so lame. Excuse me. Are you searching for glaze lilies? ये है ज्ञान यू, okay. Oh, hey, what's it? Hello, traveler. I'm surprised you still remember my name. Ah, that reminds me. How was your visit to the Jade Chamber? Well, it sure would have been better if you told us how to get up there. She is coming in next version, हाँ वही। बंदे बोल रहे थे ज्ञान्यू प्लस कौन सी वो कैरेक्टर, क्या है उसका नाम? अयाका, कामी साटो अयाका। Didn't I tell you the way? Surely I did. क्रायो कैरेक्टर अयाका। Nope, we found the way on our own. It isn't triggered. Oh, I see. Uh-oh. I guess I really did forget to tell them. Something seems a little off about Ganyu. Ganyu? She's acting different from the first time we met. Ah, well, I met you at that time as an emissary of the Tianquan. But now, I am simply out on a stroll to see the flowers. You came all the way out here to see the flowers? Wow. Why not just enjoy the gardens of the city? Yujing Terrace is where Rex Lapis Ganyu parted from and this world. Alberto in next if update. I strolled through those lonely gardens now, I wouldn't be able to bear it. Alberto नया कैरेक्टर देखो आप ये।
Whenever my duties take me near Yujing Terrace these days, I draw the windows to block my view of the gardens. Oh, sorry. We shouldn't have brought it up. No, it's quite all right. I just haven't processed my emotions yet. When the Archon War came to its end 2,000 years You can ago, call me the first Ganyu. iteration of the Ganyu. Seven would gather in Liyue and drink with Rex Lapis. But 5 of those Gane. original 7 had already passed You before can Rex call me Lapis. Gane. It's truly a changing of the guard. Ganya. Yes. अच्छा Now नाम that है the रे गन्या. spirit of Rex Lapis has returned to the गान्यू heavens, गान्यू क्या करने को? only उससे Barbados बेहतर of गन्या. Mondstadt remains of the first 7. The other 5, including Inazuma's Raiden Shogun, are no longer the same friends from 2,000 years ago. Of the current 7 Archons, the youngest is Sumeru's god of Dendro. He is merely 500 years old, whereas Rex Lapis was more than 6,000 years old at the time of his passing. This means that Liyue had been under Rex Lapis's rule from the moment it was first founded 3,700 years ago. The city has never had to bid farewell to its deity. So what do you think of this? Huh? This is a little sudden. ऐसा कुछ immediately नहीं सोचे, मगर सोचेंगे. As a mortal, I've never dared to imagine a Liyue without Rex Lapis. रो रही क्या? But as an Adeptus, I think I will eventually come to grips with reality. Since Rex Lapis has passed, the time of Liyue's contract with the gods and Adepti has now गन्या reached जल्दी its बोल, end. कल पनवेल निकल रहा है. गन्या. Did you just say as an Adeptus? इनका Yes, ऐसा ही है ये storyline जो मतलब I am a mix quest of में बोलो या human फिर and storyline में Chilean. बोलो. Adeptus blood flows through my veins. इनका जो बात I चलता रहता fought ना, for Rex Lapis and the city of Liyue इतना during the slow. Archon War. बहुत slow. After the war ended, I signed a contract with Rex Lapis and took the position as secretary for the Qixing. I've continued those duties to this very day. So you are half shielding, and that explains the horns. Well, let's save that conversation for another day. You say that you are here looking for glaze lilies? I also know where wild glaze lilies can be found. See, I've just picked one myself. Here, you may have it if you wish. नसीब नसीब नसीब. We नहीं dare तो और not एक बार refuse फाइट it. करना पड़ता वो लिली से. Oh, so did you sing a song before you picked the lily? Ganyu, Adeptus blood flow in my veins. पूछा मैं तेरे को. Indeed, I did. I know this tradition well. भाई. In fact, I sang a local Liyue ballad to Genshin it. Impact. Savage मतलब क्या बोलते? रोस्ट कर रहा है Wow, भाई. so you really know your stuff too. Thanks, Ganyu. Thanks, Ganyu. No, it is you who I should be thanking. If not for this chance meeting, I never thought that I would be able to contribute to the upcoming farewell for our ancient lord. If you would excuse me, I should return to my work now. Good luck. And that just about does it. Our preparations for the rite of parting are mostly finished. Given the ease of picking glaze lilies, I think this was a fitting end to our tasks, in more ways than one. Strongly, you seem suited to working in agricultural development. Yeah, Paimon can already imagine him starting a business in Liyue. I've had enough ventures in my life already. Beginning a new undertaking is always difficult at first, and requires no small amount of effort. And once business is at full steam, Fact, the you stress don't of it all pronounce only wears D away at you for over Y time. in Chinese. You don't pronounce D for Y. कुछ समझ में नहीं आया. तुमने डिलीट भी कर डाले मैसेज. So you must be careful to take the time to step back and re-examine yourself. If left unchecked, the wear and tear on your heart may go well past mending. Wow. See? Xiaoli sounds like he's already seen it all. Alright, I think it's about time we head back to Liyue Harbor now. Yep. खत्म हुआ कि नहीं बे? Correction.
Correction. Head back to Liyue Harbor. Harbor. Correction. In Chinese, the Y is pronounced as D. So, Y is pronounced as D. So, I am your husband को क्या बोलेंगे? I am your husband को I am do your husband? Do you husband? Do your husband? गांडू बोल रहा है. सॉरी जरा सा समझने में टाइम लगा मेरे को, लेकिन सॉरी. अब समझ में आया. गौरंग ने बताया, आप समझ में आया मेरे को. गेन्यू गांडू. सही है, ये भी सही है. कहाँ से आते हैं ये लोग? इतना दिमाग कहाँ से लगा रहे हो भाई? मेरे तो दिमाग में एक बार भी आया नहीं वो गांडू का. What happened? The city gate is swarming with Millilith and... Ah, you're the consultant to Wengsheng Funeral Parlor. Mr. Zhongli, I presume. The Millilith are watching our every move now. These are desperate times. We mustn't act rashly. Desperate times? The Adepti of Joyun Karst are finally on the move. Do they intend to exercise force? Most likely. I've heard that some members of the Qixing have already gone to meet them. Well, I say meet, but it's more like they're attempting to stall the Adepti outside the city. However, both sides were quite obstinate and hit an impasse. It seems inevitable, given the current situation. The Adepti do not acknowledge